हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। और अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सेक्शन 3 के सेकंड टॉपिक, दैट इज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक चीज हमको याद रखना है, बहुत बेसिक चीज, दैट नेशंस वर बिल्ट इन यूरोप। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, इट वॉज नॉट कंप्लीटेड ओनली थ्रू द वॉर्स एंड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन। यानी कि ये जो हमारा प्रोसेस था नेशन बिल्डिंग का, ये हमारा केवल वॉर्स या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही कंप्लीट नहीं हुआ। इस पूरे प्रोसेस में कल्चर ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, चाहे वो आर्ट हो या म्यूजिक हो या स्टोरीज हो या पोइट्री हो, ईच एंड एवरीथिंग। और इनके थ्रू बेसिकली क्या हुआ, all these forms of culture, they help the people to express their national feeling. That means their national feeling, they were shaped and at the same time they were to be expressed. ऐसे ही एक कल्चर मूवमेंट की अगर हम बात करें, that was a romanticism, it was a cultural movement. ये एक कल्चरल मूवमेंट था और ये जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल फीलिंग जो है, नेशनल सेंटिमेंट्स जो है, वो बिल्डअप करना चाहता था। That means its main objective was to develop among the people, to create among the people a particular form of national sentiments that aimed to develop a particular form of national sentiments. अब ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स क्या थे? इट वॉज बेसिकली डिपेंडिंग और मेकिंग द पीपल फील दैट दे ऑल हैव अ शेयर्ड कल्चर, a collective culture. एक्चुअली ये जो आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे, इन्होंने क्या किया, रोमांटिक जो आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे, जनरली दे हैड क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस. सो व्हाट डू वी फाइंड? पोएट्स एंड आर्टिस्ट generally criticized the glorification of science and reason. साइंस और रीजन का जो उस समय ग्लोरिफिकेशन हो रहा था, उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया. एंड व्हाट डिड दे एम्फेसाइज? दे एम्फेसाइज्ड ऑन intuitions, emotions and
मिस्टिक फीलिंग्स। उन्होंने किस चीज पर जोर दिया? इंट्यूशन पर। उन्होंने जोर दिया इमोशंस पर। उन्होंने जोर दिया सीक्रेट फीलिंग्स पर, मिस्टिक फीलिंग्स पर। राइट? दे वॉन्टेड, वो क्या चाहते थे? दे वॉन्टेड टू क्रिएट a sense of, they wanted to create among people, वो लोगों में क्या करना चाहते थे? They wanted to create among people a sense of collective. They wanted to create a sense of collective common cultural heritage. वो ये चाहते थे कि नेशन का जो बिल्डिंग अप हो, दे वांटेड टू क्रिएट अ टाइप ऑफ नेशन जहां पर रहने वाले लोगों के मन में ये फीलिंग हो कि उनका एक कॉमन कलेक्टिव हेरिटेज है, एक कॉमन कल्चरल पास्ट है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द जर्मन फिलॉसफर, अगर हम इस सीरीज में कुछ लोगों के नाम अगर हम लेकर चलते हैं तो यहां पर हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है दैट इज German philosopher John Gottfried Herder. What did he say? German Gottfried Herder ने कहा था, if you want to see, if you want to discover, if you want to see, अगर आप जर्मन कल्चर को, यानी कि ट्रू जर्मन कल्चर को अगर आप देखना चाहते हैं, then it must be discovered only among the common people. ठीक है? That means the true spirit of the German culture is only reflected among the common people living in the German speaking regions. So this was what he said, that a true German culture could only be discovered among the common people. यानी कि if you want to discover the true German culture, then it could only be found among the common people. That means das folk. And therefore what he wanted, उसका क्या कहना था कि जो भी हमारा डिफरेंट फॉर्म्स हैं कल्चर की, चाहे वो फोक सॉन्ग्स हैं, राइट, या हमारा फोक डांस है, या फोक स्टोरीज हैं, they were all required to be collected. नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस के लिए, उसके प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या चीज जरूरी है कि हम क्या करें, जो भी हमारा फोक स्टोरीज हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, फोक पोइट्री है, राइट, या फिर फोक डांसेस हैं,
उनको कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, राइट? सो व्हाट इज इट? द collection of folk songs, folk music, folk dances, folklore, etc. were necessary. The collection of folk songs that was necessary for completing the project of national building, nation building. यानी कि नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम अपने फोक सॉन्ग्स यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर, चाहे वो फोक सॉन्ग्स हैं या फोक म्यूजिक है या फोक डांसेस हैं या फोक स्टोरीज हैं, इनको कलेक्शन करना इट वाज नेसेसरी। इसके बिना यानी कि इस प्रोसेस के बिना, इन सबको कलेक्शन किए बिना हम नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को या नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। नाउ ये जो पूरा हमारा प्रोसेस है, जहां पर वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस पर एम्फेसिस दिया गया, यानी कि उनको एम्फेसाइज किया गया। द पीपल दे वर एनकरेज टू यूज द वर्नाक्युलर लैंग्वेज, दैट मीन्स देयर मदर टंग और यू कैन से द रीजनल लैंग्वेजेस। और साथ ही साथ कलेक्शन ऑफ फोकलोर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर, उस पर जोर दिया गया। लेकिन ये केवल इसलिए नहीं था दैट द रोमांटिक आर्टिस्ट और द पोएट्स और द राइटर्स दे वर वांटेड टू रिकवर ओनली द स्पिरिट ऑफ एंशिएंट नेशन. This was also one way to carry the message of modern nationalism to a large number of people who were illiterate. यानी कि ये केवल एक तरीका नहीं था कि उनको क्या करना है कि अपना एंशिएंट नेशन की स्पिरिट को रिकवर करना है, बल्कि ये एक उनका तरीका था जिसके थ्रू वो क्या चाहते थे, मॉडर्न नेशनलिज्म के मैसेज को कहां तक लेकर जाना चाहते थे. दे वांटेड टू कैरी दैट मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु वर इलिटरेट लोगों तक पहुंचाना. राइट, एंड दिस वाज स्पेशली, हम यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू पोलैंड. It was divided, it was partitioned, divided by the big powers, the big powers in Europe, big powers in the late 18th century. late 18th century में जो हमारी बिग पावर्स थी, उन्होंने क्या किया था, इसको डिवाइड कर दिया था. राइट, सो दिस वाज व्हाट वी फाइंड. इट वाज डिवाइडेड बाय बिग पावर्स. हु वर दीज बिग पावर्स? ब्रिटेन, प्रशा and Austria. So this was what done. Poland, it was divided by or partitioned by the big powers in the late 19th century, 18th century, sorry. It was no more an independent nation. अब ये एक independent nation नहीं था.
not an independent nation. Independent nation, but nationalist feelings among people were kept alive through music and language. म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू उन्होंने क्या किया, लोगों के बीच में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को अलाइव रखा, जिंदा रखा। राष्ट्र के प्रति जो उनकी फीलिंग्स थी उसको उन्होंने जिंदा रखा। किसकी हेल्प से? म्यूजिक और लैंग्वेज की हेल्प से। We can take here the name of Karol Kurpinski. What he did, उसने क्या किया? उसने अपने ओपेरा और अपने म्यूजिक के थ्रू जो पोलैंड के फोक डांसेस थे, मजूरका एंड पोलोनेज, उनको उसने क्या किया? पॉपुलराइज कर दिया। उनको उसने नेशनल डांसेस में क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। यानी कि ही हैड सेलिब्रेटेड द नेशनलिस्टिक फीलिंग्स। नेशनल फीलिंग्स को उसने सेलिब्रेट किया अपने ओपेरा के थ्रू, अपने म्यूजिक के थ्रू, एंड ट्रांसफॉर्म द फोक डांसेस लाइक पोलोनेज एंड मजूरका एज टू कैरी द masses of nationalism to be spread among the people of Poland. So what he did through his operas and music, celebrated the national feelings and transformed the folk dances like Polonaise and mazurka as he had transformed the folk dances like Polonaise and mazurka, a way to express the national feeling को एक्सप्रेस करने का, यानी कि उनको उसने क्या किया? नेशनलिज्म का सिंबल बना दिया। This was also happened in case of language also. This was also happened in case of language also. When the Russians occupied Poland, जब उन्होंने पोलैंड पर अपना कंट्रोल कर लिया, किसने? रशियन से। They had driven out the Polish language from the schools and enforced the people to use only the Russian language. That means the Russian language, it was to be forced to be used in schools as well as in church gatherings. So this was what happened here. Language also played
an important role to shape the national feeling, to shape the national feeling. टू शेप द नेशनल फीलिंग्स, यानी कि उनको शेप देना, उनको एक्सप्रेस करना, नेशनल फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी लैंग्वेज भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई, राइट? Now, how did this language played an important role in shaping the national feeling? When the Russians made their control over Poland, they forced Russians Russian to be used in schools and church gatherings. चर्च गैदरिंग के लिए और स्कूल्स में उन्होंने ये फोर्स किया कि केवल पोलिश लैंग्वेज के बजाय किसको यूज किया जाए? रशियन लैंग्वेज को यूज किया। In 1831 a revolution was there. There was a revolution against the Russian occupation, over Poland, which was suppressed. रशियन ऑक्यूपेशन के खिलाफ क्या हुआ? 1831 में एक रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन इस रेवोल्यूशन को उन्होंने सप्रेस कर दिया, दबा दिया। नाउ आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड? आफ्टर दिस language was used as a weapon against the Russians. रशियंस के खिलाफ उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को एक वेपन की तरह से उन्होंने यूज किया। The priests denied to use Russian language at church gatherings. जो भी प्रीस्ट थे, बिशप थे, उन्होंने रशियन लैंग्वेज को चर्च गैदरिंग्स में यूज करने से डिनाई कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। व्हाट हैपेंड देन? A large number of such priests and bishops who had refused to use Russian language in church gatherings
were arrested, and many more were exiled to Siberia. Were exiled to Siberia. यानी बहुत से ऐसे प्रीस्ट को, बिशप्स को क्या किया गया? अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, और इनमें से भी बहुत से इस तरह के जो प्रीस्ट या बिशप्स थे उनको साइबेरिया में एक्साइल कर दिया गया. सो दिस एग्जाम्पल क्लियरली शोज that even the language had been used by the people to struggle against the foreign dominations over their territory. It was also became a symbol to express the nationalist feelings in the European countries. Right? In the nation building process in Europe. So this is all about this video. I hope कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक भी समझ में आया होगा. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा आप इसको अगर ध्यान से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, इट विल हेल्प यू आउट. आपका जो क्वेश्चन आता है बेसिकली 3 मार्क्स में, इसमें आपका जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो रोमांटिसिज्म के ऊपर बन सकता है कि व्हाट वाज द रोमांटिसिज्म. ठीक है. दूसरा आप में जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें यू कैन हैव द 1 मार्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन जर्मन फिलोसोफर गॉटफ्राइड हर्डर, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर. देन आपका लैंग्वेज और जो आपका फोक डांसेस हैं, फोक म्यूजिक हैं, उस पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन बन सकता है. दैट लैंग्वेज टू प्लेड an important role in expressing, shaping and expressing the national feeling. ये आपका एक स्टेटमेंट क्वेश्चन हो सकता है, और इसको आप जस्टिफाई करेंगे with the help of this example. Thank you, and if you like this video, please subscribe my channel, like this video, share this video to your friends, right? And have a happy learning.